Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you about writing skills. Actually, many students, I've seen the papers or checked the papers of many students, and I found that they are facing problem in writing as well. So since I'm teaching you semantics, so I thought that why shouldn't I teach you a few things regarding writing, which is very important, and it's linked with semantic as well. Semantic deals with meanings, and definitely we have to convey meaning through writing. As you know, there are two ways of communication. One is spoken and second is written. So writing is definitely a very powerful tool of communication. So in today's class I will teach you general rules of writing, and I hope inshallah after watching this video it will be clear to you that how things we do regarding writing. So let's start. How to do effective writing. Okay, now it is a general rule. Remember, I'm telling you those things which are generally accepted, and we can apply these things whatever writing we do, whether we are writing an essay or we are writing an article. So these are general things which we have to do. So there are three stages of writing. Number one is first is pre-writing stage, second is while writing stage, and the third one is post-writing stage. Remember, these are the three stages which you can apply everywhere. Whether you are writing the answers to the question in your exams, आप अपने इम्तिहान में अगर क्वेश्चंस के जवाबात भी लिख रहे हैं तो आपने इन्हीं तीन स्टेजेस को फॉलो करना होगा. इसके अलावा कोई भी राइटिंग आप कर रहे हैं, इवन इफ यू आर राइटिंग सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं, कोई मतलब आप इवन शादी का कार्ड लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपने इन तीनों स्टेजेस को अप्लाई करना है. सो वट एवर राइटिंग यू आर डूइंग और वट एवर राइटिंग यू डू, you have to apply these three stages. These are general for all types of writing. So that is why I've given the title to this particular lecture, how to do effective writing. So pre-writing stage, while writing stage, and post-writing stage, these are the three stages which you have to follow. Now, first of all, what is pre-writing stage? This is very important. Remember, we do all the plannings and all such thing in pre-writing stage. नॉर्मली इट हैपन्स, होता ये है कि हम जब कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, कोई ऐसे कोई लेटर या कुछ भी हम लिखने के लिए बैठते हैं, तो क्या होता है, वी डू नॉट हैव एनी प्लानिंग, वी डू नॉट प्लान एनीथिंग एल्स, वी डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट वी स्टार्ट राइटिंग, एंड देन व्हाट हैपन, डेफिनेटली वी डू नॉट राइट इफेक्टिवली. फिर हम क्या होता है कि इफेक्टिवली लिख नहीं पाते, और जिसकी वजह से हम हमारा मैसेज जो है वो कन्वे सही मानों में नहीं होता. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि राइटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है ऑफ कम्युनिकेशन का, एंड थ्रू राइटिंग वी कैन मेक अ ग्रेट चेंज, वी कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन आवर सोसाइटी, इन आवर कम्युनिटी और इन द वर्ल्ड. देर आर राइटर्स इन द वर्ल्ड हु आर वेरी फेमस, दे ऑल वर राइटर्स. इनमें आपको कोई स्पीकर नहीं मिलेगा, बट दे वर राइटर्स, एंड थ्रू देयर राइटिंग दे हैव ब्रॉट अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन द whole world. So these are the steps. First of all, as I told you, these are the steps to follow in pre-writing stage. Number one, read the question or essay title carefully. Read the question or essay title carefully to make sure you understand exactly what is required. Now, this is very important. For example, if you are given a, a topic in the exams to write on, so what you have to do, first of all, you have to read the title of the topic. जो भी title हो, हाँ वो title can be in the form, the title of the topic can be in the form of one word, phrase. It can be in the form of even a sentence. तो क्वेश्चन की सूरत में हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है. First of all, you have to read it very carefully, and you have to understand what is it, or what the title is exactly about. जब उसको आप समझ जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपके पास दूसरा स्टेप होगा, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का होगा. ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स यू हैव टू गिव फ्रीडम टू योर थॉट्स, वट एवर कमिंग टू योर माइंड, जो भी आपके जहन में आ रहा है आइडियाज़ उस टॉपिक से रिलेटेड, वो जो आपके पास टॉपिक्स का जो क्या कहते हैं टाइटल है उससे रिलेटेड, या टॉपिक जो उससे रिलेटेड आपके पास जहन में चीज़ें आ रही है, उन सबको आप क्विकली नोट डाउन कर लें. क्विकली नोट डाउन some ideas on the topic as you think of them, then write down some vocabulary. उसके बाद आपने क्या करना है,
उससे रिलेटेड वोकेबलरी को आपने जल्दी से लिखना होगा अपने पास। कोई नोटबुक या कोई रजिस्टर लें, उसमें आपने एक प्रोसेस करना होगा। तो पहला जो आपके पास प्रोसेस है वो तो ये है कि आपने क्वेश्चन या जो भी आपका टाइटल है उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा। यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इट इज़ अबाउट। अगर आपने टाइटल ही गलत समझ लिया, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द टाइटल प्रॉपरली, सो डेफिनेटली यू विल नॉट राइट टू द पॉइंट। बाज़ औक़ात देखा गया कि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन को समझते नहीं है, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो गलत आंसर लिख देते हैं। दे राइट रॉन्ग आंसर, एंड व्हेन दे राइट रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर, सो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली दे विल लूज मार्क्स। तो जवाब जो सवाल है उसका जवाब ही नहीं देंगे तो ज़ाहिर है आप तो पूरा सवाल ही मिस कर गए। अगरचे आप समझ रहे हो कि मैंने तो बहुत कुछ लिखा है, तो भाई आपका जवाब भी टू द पॉइंट लिखना होगा। इट इज़ समथिंग दैट हैपन्स वेरी कॉमनली इन लिटरेचर। लिटरेचर में बहुत आम होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ता नहीं है या वो मेहनत से नहीं करता तो वो सवाल भी नहीं समझ सकता, एंड देन ही राइट्स रॉन्ग आंसर एंड लूजेस मार्क्स एंड ही फेल्स देन। सो रीड द क्वेश्चन और टाइटल वेरी केयरफुली। तो ये यहाँ पे जनरली मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन टाइटल हियर मीन्स इवन व्हेन यू attempt questions in the exam, so read the questions very carefully before starting writing. Second step is brainstorming. अब ये ज़ाहिर ऐसे से मखसूस है, brainstorming means you have to quickly collect some ideas and similarly अगर तो आप बहुत से स्टूडेंट डाटा क्रेमिंग करके आए होते हैं तो वो अलग बात है। We should not learn by heart. We should try to understand the concept and then we should try to write in our own words. Remember, this is very important. So then you can definitely think about ideas, because in the exams we have only 3 hours, or real life में भी हम जा रहे हैं हमारे पास limitations होती हैं, we have word limits and we have some other limitations, so we have to stay in the limitations. We are not supposed to go beyond the limitations or beyond the time. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। इन ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ वगैरह जो है उसको आपने लिखना होगा जैसे भी आपके जहन में आ रहे हैं, और उसके बाद वोकैबुलरी लिखनी होगी। थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द रेलिवेंट पॉइंट्स और थॉट्स। फिर जो तीसरा स्टेप है उसमें आपने क्या करना होगा, यू हैव टू सेलेक्ट द रेलिवेंट पॉइंट्स और थॉट्स। यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड वट एवर has come to or whatever came to your mind. You have to select those which are very much relevant, keeping in mind time and word limit. Remember, आप किसी जनरल के लिए, किसी न्यूज़पेपर के लिए अगर कुछ लिख रहे हैं तो you must be given certain rules and regulations, and they will give you word limit कि आपका जो है आर्टिकल जो है वो 2000 वर्ड्स का या 800 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का, और your article should be of 1500 words. If you write beyond 1500 words, so that article will not be accepted. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखकर क्या करना होगा, यू हैव टू सेलेक्ट द थॉट्स एंड द रेलिवेंट पॉइंट्स। एंड द फोर्थ स्टेप इज ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स और थॉट्स। फिर आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है, सीक्वेंस में लाना होगा। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है। नाउ आई विल शो यू प्रैक्टिकली दोज थिंग। थोड़ा मैं आपको उसका प्रैक्टिकल व्यू दिखाता हूँ। You can see over here, just you can see here I have selected one topic. The name of the topic is why do people tell lies. ये एक टॉपिक है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आई एम जस्ट शोइंग यू हियर दैट आई हैव selected this topic. I can write a complete book on this topic and I can write 1 page, 10 pages, 20 pages on this particular topic or any topic. Remember, for literature, for students of literature, there is nothing final and there are too many things to write. You can write on anything, any person, any place. और आप किसी भी चीज़ पर, शख्स पर, किसी भी जगह पर आप लिख सकते हैं. So this is the beauty of literature, and this is the beauty that we can enjoy in even language. If we know about language, if we know the ins and outs of language, and if we know how to use language, then we definitely can play a very significant role in our society, community, in our country, even in the world. So why do people tell lies? ये इसका प्री स्टेज राइटिंग देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. तो आपने अंडरस्टैंड किया टॉपिक, मैंने क्या अंडरस्टैंड किया, इट इज़ अबाउट द रीजंस फॉर विच पीपल टेल लाइज. ये जो इट इज़ का मतलब है, दिस टॉपिक इज अबाउट द रीजन फॉर विच पीपल टेल लाइज. It is a general topic in which we can also include our own experience as well as the experiences of others. मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपना तजुर्बा और अपने जो दूसरों का तजुर्बा है उसको इंक्लूड कर सकते हैं.
तो ये मुझे टॉपिक समझ में आया कि वाई डू पीपल टेल लाइज, ये एक सवाल है जिसका हमें बताना होगा। बताना होगा तो समझ में ये आया कि इट इज़ अ जनरल टॉपिक इन विच रीजंस for which people tell lies are being asked, and of course we can include our experience as well as the experiences of others. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। फिर सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्टेप बाय स्टेप। रिमेंबर वी आर डूइंग राइट नाउ प्लानिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है कि आई हैव कलेक्टेड दीज आइडियाज, like because people want to stay safe from problems, or they want to get benefits, they tell lies to gain personal benefits, लोग personal benefits के लिए भी झूठ बोलते हैं। for selling their products, अगर कोई ताजिर झूठ बोल रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए झूठ बोल रहा है। for earning money, a shortcut to earn money, बहुत से लोग जो है इसको शॉर्टकट समझते हैं और झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग कन्विंस करने के लिए दूसरों को झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों की आदत झूठ बोलने की होती है एज अ हैबिट, एंड फॉर चीटिंग पीपल, कुछ लोग लोगों को धोखा देने के लिए, अपने मफादात को हासिल करने के लिए दे टेल लाइज। सो these are the ideas which I have collected. So you can also collect many ideas. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितना, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट में बाकायदा आपको मैं कुछ रूल्स दूंगा। आई विल गिव यू सम rules to follow, and you have to follow those rules. Among them there will be one rule that is related to word limit. उसमें एक रूल होगा वर्ड लिमिट से, ठीक है। वर्ड लिमिट का होगा कि आपने इतने वर्ड्स का जो है वो अपना असाइनमेंट करना होगा, तो आपने उतने ही वर्ड्स का असाइनमेंट करना होगा, उससे आप आगे मत जाइएगा या उससे कम मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत 19-20 तो चल जाएगा, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेटली वी हैव टू कलेक्ट आइडियाज़। उसके बाद आपके पास vocabulary, you can see these are the vocabulary which I have collected, and these are the relevant vocabulary. इनमें बहुत से relevant भी होंगे जिनको मैं बाद में मतलब बाद में उसको सिलेक्शन वगैरह के प्रोसेस में हटा दूंगा। So cheating, good, bad, stop, running a business, expensive, cheap, punishment, careful, fear of Allah Almighty, fear of the employer, laziness, lateness, not hardworking, get late, sports activities, product, salesmen, shopkeepers, shops, roads, streets, clothes, shops, businessman, clever, ignorant, fake news, satisfaction, necessary things, and etc. etc. You can see these are the vocabulary. तो याद रखिएगा अभी जो आइडियाज और vocabulary है ये दोनों फाइनल, ये सिर्फ मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया है। तो अगला जो इसका प्रोसेस होता है उसमें आपने डेफिनेटली यू हैव टू सेलेक्ट, आपने उनको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टे फॉर प्रॉब्लम्स, स्टे सेफ, स्टे सेफ्टी फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ये सेफ्टी प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स का है। फिर उसको आपने रिफ्रेश भी करना होता है, यू हैव टू डू रिफ्रेश एज वेल, ठीक है। ये एक हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट। और कौन सा सेलेक्ट किया है थर्ड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप याद रखिएगा, सिलेक्शन फॉर द पॉइंट्स और थॉट्स। दूसरा कौन सा, फॉर गेनिंग बेनिफिट्स, फॉर गेनिंग बेनिफिट्स कहाँ पर है, ये रहा, they like to gain personal benefits, ये दूसरा। थर्ड फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये रहा, फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स। थर्ड वन। फोर्थ वन फॉर अर्निंग मनी, नहीं, शॉर्ट कट टू अर्न मनी, ठीक है, तो ये रहा फॉर अर्निंग मनी। ये चौथा पॉइंट जो मैंने जो है वो सिलेक्ट किया। फॉर कन्विंसिंग पीपल, वेयर इज द फिफ्थ वन, तो ये पांचवा हमारा ये हो गया, फॉर कन्विंसिंग पीपल। तो इस तरह आपने क्या किया, you have selected 5 points or thoughts. You have selected 5 points or thoughts from the brainstorming ideas. Remember, now you are not supposed to write them as it is in selection in the step 3. You have to rephrase them. कोशिश ये करें कि इनको रिफ्रेश करके phrases या one word की सूरत में लाएं, ठीक है। Try to rephrase them into phrases or one word. Now you can see when I rephrase, so it has become safety from problems. ये एक हमारा हेडिंग हो गया, हमारी हेडिंग होगी। नंबर 2 फॉर गेनिंग बेनिफिट्स, ये सेकंड हो गया। नंबर 3 फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स, नंबर 3। नंबर 4 शॉर्टकट टू अर्न मनी, शॉर्टकट टू अर्न मनी, नंबर 4। एंड नंबर 5 फॉर कन्विंसिंग पीपल। तो इस तरह से आपने उनको रिफ्रेश करना होगा। यू हैव टू रिफ्रेश द आइडियाज विच यू हैव सेलेक्टेड इनटू फ्रेजेस और वन वर्ड। कोशिश करें उस जुमले की सूरत में ना हो। So this is step number 3, and then the fourth step is definitely very important, and here you have to organize them.
विच आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट, जो ज़्यादा प्रायोरिटी पर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा, उसको मैं पहले बताऊंगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, एंड देन द लास्ट वन इज फोर्थ. सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मी दिस वन, फॉर स्टेइंग सेफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसको यूँ भी आप कर सकते हैं, सेफ्टी फ्रॉम प्रॉब्लम्स भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब तीनों में बात के फोर फोर लग रहा है, तो इसको भी हम फोर ही पे लगा देते हैं, फोर ही लगा देते हैं. सो फॉर स्टेइंग सेफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स, नंबर टू फॉर गेटिंग बेनिफिट्स, नंबर थ्री फॉर selling products, and number four for convincing people. So you can see this is how I have done my first stage, that is called pre writing stage. ये पहला वाला स्टेज मुकम्मल हुआ. ठीक है, ये पहला स्टेज है, पूरे इस पे आ नहीं रहा, मुकम्मल हुआ. लेट मी शो यू हियर, फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको. ठीक है, ये पहला स्टेज इस तरह से मुकम्मल हुआ. नाउ द सेकेंड स्टेज इज प्री राइटिंग. अब आपने जो कुछ आपने कर लिया, नाउ यू हैव डन प्री राइटिंग स्टेज, मीन्स आपकी अब जो प्लानिंग थी वो हो गई. नाउ वाइल राइटिंग स्टेज, नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. अब आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है. दिस इज कॉल्ड वाइल, दिस स्टेज इज कॉल्ड वाइल राइटिंग स्टेज. तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, स्ट्रक्चर ऑफ द एसे और स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकल जो भी आपके पास है, उसका क्या होना चाहिए, ये आपके पास है. कि इंट्रोडक्शन, फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. स्ट्रक्चर ऑफ द structure of the essay, introduction, first is introduction, and the second is body, third is conclusion. So इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना होगा, यू हैव टू राइट, यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक. इसमें अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो एग्जाम्स में अपने आंसर लिख रहे होते हैं, तो इंट्रोडक्शन में वो क्या करते हैं, दे राइट अबाउट द राइटर, राइटर के बारे में लिख देते हैं कि ही वाज बोर्न इन दिस एंड दैट year and he received his education from this and that. Don't need to write introduction of the writer, don't need to write introduction about, don't need to give any information about writers birth, about writers education. इंट्रोडक्शन मीन्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक. जो आपका टॉपिक है उसको आप इंट्रोड्यूस करवाएं. ठीक है, जब वंस यू इंट्रोड्यूस इन द दैट इंट्रोडक्शन शुड बी इन द फर्स्ट पैराग्राफ. जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू राइट, you have to write the introduction of to the topic in the first paragraph, and then you have to start body. Body includes it includes points of view and information, your information in support of the argument with reason, give contrasting views, etc. Remember, you have to give points of view and information in support of the argument with reasons. You have to give contrasting views as well, और फिर आपने contrasting views वगैरह ये सब भी देने होंगे. So this is very important in body. So body is definitely includes all these things. Body में सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं. बॉडी में ही सारी डिटेल्स होंगी, बॉडी में आपने कंपैरिजन करना होगा, बॉडी में आपने एग्जांपल्स देनी होंगी. The third one is conclusion, where you have to give your own opinion. You can give your own opinion or interpretation of the facts, and you have to summarize whatever you have said in the body. Now, many times I've seen in students' copies that they give lots of examples in the conclusion as well. Conclusion के अंदर भी वो examples या comparison करना शुरू कर देते हैं. Conclusion में से चीज़ें नहीं होती. Conclusion में सिर्फ आपने summarize करना होता है. जो कुछ आपने बॉडी में कहा, उनको आपने समराइज करना है कंक्लूजन में अपने अल्फाजों में. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन ओपिनियन इफ इट इज नेसेसरी. देन यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन, बट you have to summarize whatever you have said in the body in your own words. So introduction, body, and conclusion, this is the structure of any writing. Whether you are writing a letter, whether you are writing an essay, whether you're writing an article, whatever you write, you must have introduction and you must have conclusion, and in the middle you will find body. तो ये structure है जो आप समझ लीजिएगा. इसी तरह से if you speak something, if you are writing, if you are speaking, making a speech somewhere else,
So you must know about this thing, that there must be a introduction, there must be an introduction and body and then conclusion. This is a proper structure. Now there are things which we need to remember, कुछ चीज़ें जो जहन नशीन करनी होंगी. नंबर वन, रिमेन फोकस्ड ऑन द मेन आइडिया. जो आपका मेन आइडिया है उस पर फोकस रहिए. इफ यू चेंज दिस, गो बैक एंड अडेप्ट योर ओरिजिनल प्लान टू इंश्योर that your essay continues to support the new plan. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जहन बना कि यार कुछ इसमें तब्दीली करनी चाहिए मुझे, और यू हैव टू डू सम, मेक सम अदर to include something else, so do not do it directly. First go back to your plan and then make changes over there to ensure that your essay will continue to support the new plan. ऐसा ना हो कि आपने changes डायरेक्ट कर लिए और उसके बाद में आप फंस गए. Because once you write, so definitely it should be written after a good plan. If you don't write, after a good planning, then it will definitely not be effective. वो उसमें effectiveness नहीं होगी. Follow your routine, follow your outline, modifying it if necessary. अगर ज़रूरत है तो modify करें. If it's not necessary, don't need to modify. In early drafts, concentrate on structure rather than spelling and punctuation. जो आपका early draft होगा, means right now this is called early draft. In your in your while writing stage, it is called early draft. So here concentrate on structure. जो structures हैं उन पर तवज्जो रखें rather than spelling and punctuation. Spelling and punctuation will definitely come. You can make them better or you can improve them later on. But right now your focus should be on structure. So these are the points which you should remember, or students should remember during while writing stage. Now, in while writing stage, ask yourself. You can ask certain questions. ये एक चीज, एक तरीका कार है जिसकी मदद से you can also, make or bring great improvement in your writing skills. You can ask certain questions. तो आप अपने आप से सवालात भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, I just forgot, एक अच्छा सा नाम है उसको, हम वो कहते हैं. So you can ask this question to yourself: have you answered the question or achieved your original purpose? Have you introduced your subject, developed it logically, and come to a conclusion? Is your supporting evidence appropriate and complete? Do you need more examples, statistics, or quotes? Have you used heading to help the reader if appropriate? Are the relationships between ideas clear and clearly signaled to the reader? Is each part the right length for the demands of the topic with no part too long? Is each part the right length for the demands of the topic with no part too long? ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है और कोई कम लेंथ में हो और सही मानों में कन्वे ना कर रहा हो. So you have to see this one as well. So these are the questions which you have to ask while writing stage. So once you finish while writing stage, then your work will start off the next one. So let's see while writing stage को हम यहाँ देख लेते हैं. ये है while writing stage. अब आपके पास, you can see there, while writing stage I started on the same topic. तो मैंने introduction की heading डाली से बताने के लिए कि, and you can see over here I've just given the topic introduction. This world is full of many types of people. अब यहाँ पे कुछ spelling वगैरह के errors होंगे, तो आप don't worry about spelling and punctuation here, because this you can improve in the post writing stage. So this world is full of many types of people. Some people are good, some people are bad, and some people possess both the qualities. So in today's essay, or in today's article, or in today's topic, I will tell you, I would like to tell you, in the light of my own personal experience and knowledge, the various reasons for which people tell lies. तो ये आपका हो गया introduction, first paragraph. Then you have to start your body, and you have to explain according to the uh, you know points which you have already organized in your pre-writing stage. तो उनको one by one आपने करना होगा. आपको गालिबन पता होगा, ये आपको पढ़ाया भी गया होगा, especially in your functional English class, that every paragraph has a topic sentence and supporting sentences. जो हर पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, और बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं वो सपोर्टिंग
सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाते हैं, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको. तो बी केयरफुल अबाउट पैराग्राफ एज वेल. Don't need to write or don't write any sentences or include any sentences which do not support your topic sentence. So every paragraph should be well connected to other sentences in every paragraph should be well connected to each other, and they should be relevant to each other. तो ये paragraph writing में I hope you must have been taught. तो ये देखें, इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, मैनी पीपल टेल लाइज बिकॉज दे वांट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम. फिर आगे जो है उसको सपोर्टिव सेंटेंसेस के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया. सेकंड पॉइंट, then paragraph third, then fourth, right? In this way, 4 points I have mentioned here. तो इन चारों को मैंने explain भी किया. In every paragraph they have been explained. And then conclusion की भी heading डाली. Heading normally you are not supposed to write heading, but here just you have to show heading because you are showing uh, I'm just showing you that how you have to do writing. That's why I have mentioned headings here. So conclusion को देख लें आप. And to conclude, I would like to say that there are various reasons people tell lies, as I have mentioned above, that people tell lies to stay safe from problems, gain benefits, and all these things. तो उन्हीं चीज़ों को मैंने क्या क्या summarize किया. In conclusion, I have summarized whatever I have already said. So this is how I have written on this topic an article, or I've written this on this topic an essay, and introduction, body, and then conclusion. तो आपने भी जो भी आपको टॉपिक मिला जाएगा या जो आप चूज़ करेंगे, तो आपने भी उसको बाकायदा इसी तरह से वाइल्ड राइटिंग स्टेज बना के बताना होगा कि ये इस तरह से इंट्रोडक्शन है, ये इसका बॉडी है, और ये इसका कंक्लूजन है. वाइल्ड राइटिंग स्टेज में आपने बिल्कुल ऐसे ही करना होगा, और मुझे देखना है कि आप आया उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं. एंड देन द थर्ड स्टेज विल स्टार्ट. इसके बाद कौन सा स्टेज शुरू होगा? थर्ड स्टेज विल स्टार्ट. Then third stage will start. That is called post writing stage. Third stage को हम क्या कहेंगे? Post writing stage. So third stage is post writing stage. Now this is again a very important stage, and unfortunately it is my personal experience. I've been teaching English language for the last 20 years, and I've been teaching at university at university level for the last 13 years. So I have personally observed many things, and I'm a researcher as well. I have personally observed that students do not understand what post-writing stage is. They do not know the value of pre-writing stage. They do not know about post-writing stage. They just start their writing in while writing and finish in while writing. Exams time of examination gets over and they don't know that they have to finish before the time. उनसे कॉपीज छीननी पड़ती हैं, मतलब आखिरी वक्त में भी वो कापी मांग रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, और उनसे कॉपीज छीननी पड़ती हैं. उनको ये नहीं पता कि पोस्ट राइटिंग स्टेज भी हमें करना है. एंड इन पोस्ट राइटिंग स्टेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रूफ रीडिंग दैट यू हैव टू डू. यू हैव टू प्रूफ रीड वट एवर यू हैव रिटन. उस दौरान आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी विच यू कैन करेक्ट, एंड दीज थिंग्स कैन leave a very good impact on your teacher. If you don't do these things, so these things also can leave a very bad impact upon your teacher. So read your writing with a critical eye and ask this question to yourself. अपने आप से ये सवालात पूछें. Have you used paragraph breaks well? क्या आपने कनेक्ट उनको अच्छा किया पैराग्राफ को? मैंने आपको पहले भी कहा था कि connectors are very important. That is also called conjunction and simple words. So you have to see whether you have connected your paragraphs well or not, and you have to also see whether the sentences you have used in the paragraph are well connected to each other or not. These two are very important questions which you have to keep in your mind. Then second is the level of formality appropriate for your readers? जो आपने level रखा है, is it appropriate for your readers? If you're writing to children, if you're writing something for children, so what kind of language you should use? This is very important. And what kind of register you should use is very important. If you're writing something for adult, it is very important to know what kind of level
you should use over there. If you're writing for your something for your teacher, like in the exams you write your answers to your teachers, your answers for your teachers, so you have to know what the teacher has instructed. जो टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए उसके मुताबिक आप करें. सो लेवल ज़ाहिर है in exams, and if you're writing something to any authorities like letters or applications or articles, if you're writing articles, if you're writing in the exam, so all these are called academic writing. In सबको हम क्या कहेंगे? Academic writing. और academic writing is always formal. ये सब formal ही होती है, it is not informal. तो लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी को भी देखा जाता है कि कितना फॉर्मल में भी लेवल होता है, कितना उसका लेवल होना चाहिए. हैव यू चूजन योर वर्ड्स केयरफुली यूजिंग करेक्ट कॉलोकेशंस. फिर देखना ये कि क्या आपने जो है वर्ड्स जो है वो चूज किए वो प्रॉपर है या नहीं, और उनकी कॉलोकेशन कैसी है, कॉलोकेशन उनकी दुरुस्त है या नहीं, ये भी आपने देखनी है. हैव यू अवॉइडेड, ये हैव यू अवॉइडेड रिपीटिंग द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस टू ऑफन. क्या आपने जो है कुछ फ्रेजेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं या सेम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपने हैव यू अवॉइडेड रिपीटिंग द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस टू ऑफन. क्या आपने उसको बार बार तो मतलब उसको अवॉइड किया है क्या आपने. एक्सेप्ट टेक्निकल टर्म्स, हाँ जो टेक्निकल टर्म्स है तो उनको आप रिपीट कर सकते हैं, बट डोंट रिपीट फ्रेजेस और एक जैसे वर्ड्स. हैव यू मेट एनी वर्ड काउंट रिक्वायरमेंट्स. अगर कोई वर्ड काउंट रिक्वायरमेंट है तो क्या आपने उसको फॉलो किया है, उसको मीट किया है. एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू राइट something for any newspaper, magazine, journal, or for any institution, or for any organization, so they will give you word count as well. They will ask you to write on this topic. For example, अगर आप आजकल जैसे वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग वगैरह होती है, उसमें अगर आपने लिखना होगा, आपसे कहा जाएगा कि हम आपने 1000 वर्ड्स का जो है ये इस पे लिखना है, 1000 वर्ड्स का जो है वो बनाना है आपने, ये इस टॉपिक पर लिखना है आपने, या 800 वर्ड्स का लिखना है. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड वर्ड काउंट इज वेल. सो रीड योर राइटिंग विद अ क्रिटिकल आई एंड आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन. आफ्टर रीडिंग विद क्रिटिकल आई, आपने करना क्या होगा, रिव्यू करना होगा, और जिसको हम एडिटिंग भी कहते हैं, एडिटिंग और रिव्यू. सो रिव्यू में आपने क्या करना होगा, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फाइंड आउट स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपको मिलेंगी. देन प्रूफ रीडिंग इज द लास्ट स्टेप. हियर यू विल चेक फॉर स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. चेक विद योर टीचर और ट्यूटर. और अगर आपके पास टाइम है, if you are writing an article, research paper like things, so you can get somebody's help as well. किसी दूसरे बंदे को आप चेक करवा दें, ट्यूटर को चेक करवा दें. एंड हाउ यू शुड प्रेजेंट योर वर्क इन टर्म्स ऑफ, फिर उसमें आपने यू हैव टू सी फॉन्ट साइज, मार्जिन्स, लाइन स्पेसिंग एंड पेपर साइज. दीज थिंग्स आर ऑल्सो टू बी चेक्ड. देन यू हैव टू प्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट. उसके बाद जो आप ड्राफ्ट लाएंगे, जो आप लाएंगे वो दैट इज कॉल्ड फाइनल. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर. Let's see these things here. Post writing stage. So review or editing on hard copy. ज़्यादातर कोशिश करें when you do review or hard editing, so it should be done on hard copy rather than soft copy. हार्ड कॉपी में चीज़ें जल्दी पकड़ में आती हैं, सॉफ्ट कॉपी में वो नज़रों से गुजर जाती है. चेक फॉर स्पेलिंग, पंचुएशन एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. चेक फॉर स्पेलिंग, पंचुएशन एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. लाइक जैसे मैंने जो लिखा था उसमें, व्हेन आई चेक सो आई फाउंड दैट देयर वाज एस मिसिंग, तो मैंने उसको सही कर दिया. सम पीपल आर गुड, सम बैड, सम पीपल पजेस, तो यहाँ पे विदाउट एस आना था, उसको मैंने करेक्ट किया. बहुत दी क्वालिटी. सो दीज आर द करेक्शंस व्हिच आए. द टाइपिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, पंचुएशन मिस्टेक्स, grammatical errors. You can do all these things in review. And finally जो आपका है proof reading, उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं. So you can see over here I have done all these things through track changes. तो ये भी आपने सब करना होगा. Proof reading on hard copy.
फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से उसको किया और उसको प्रूफ रीडिंग की मैंने हार्ड कॉपी पर मैंने जो प्रूफ रीडिंग की उसके लिए फिर अलग से एक दफ़ा फाइनल प्रूफ रीडिंग की हार्ड कॉपी पर। यू कैन सी हियर, दिस इज़ प्रूफ रीडिंग ऑन हार्ड कॉपी। जब मैंने प्रूफ रीडिंग की तो अपनी तरफ से मैं मुतमिन हो गया, राइट। और उसके बाद फिर क्या किया, फाइनल ड्राफ्ट। नाउ व्हेन यू मेक फाइनल ड्राफ्ट, सो रिमूव ऑल दी हेडिंग्स। जब आपने फाइनल ड्राफ्ट बनाया तो आपने क्या करना, तमाम हेडिंग्स को आपने क्या करेंगे, यू विल हैव टू रिमूव, यू हैव टू रिमूव ऑल दी हेडिंग्स। देखें मैंने अब इंट्रोडक्शन की हेडिंग भी हटा दी एंड बॉडी की हेडिंग भी हटा दी एंड ऑल द हेडिंग्स आई हैव रिमूव। दिस इज माय फाइनल ड्राफ्ट। ये मेरा फाइनल ड्राफ्ट है जो आपके सामने है, ठीक है। लेट मी शो यू हियर, दिस इज फाइनल ड्राफ्ट। ये आपका फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल ड्राफ्ट एंड दिस इज योर द फाइनल, दिस इज कॉल्ड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर राइटिंग। ये आपकी राइटिंग का फाइनल प्रोडक्ट है जो आपने लाना होगा। लेकिन ये एक ऐसे नहीं आता जिस तरह आपने, आपसे किसी ने कहा लिखो, आपने फटाफट लिखना शुरू कर दिया। उसके लिए आपने तमाम स्टेजेस को फॉलो करना होगा, प्री राइटिंग स्टेज, वाइल राइटिंग स्टेज एंड पोस्ट राइटिंग स्टेज। And I told you that this is something that you have to do whenever you write anything, whatever you write, whenever you write, you have to follow all these three stages। ये तीनों stages आपने follow करने होंगे। Why? Because without following these stages you cannot produce an effective writing। हम लोग जो जल्दबाजी का मुजाहरे करते हैं विदाउट प्लानिंग, कोई भी काम बगैर प्लानिंग के हम जब भी करेंगे, विल फेस म्यूजिक, विल फेस ट्रबल्स, विल बी इन डीप ट्रबल एंड विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इफेक्टिव थिंग, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा जो आप लोगों ने करना होगा। रिमेंबर, मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह ये सेंड भी कर दूंगा, तो आप लोगों ने इसको बाकायदा शुरू कर देना है एंड आई विल गिव यू 15 days। 15 days टाइम पीरियड विल बी विद यू एंड यू हैव टू प्रोड्यूस, यू आर फ्री टू चूज एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को आप चूज कर सकते हैं एंड यू कैन राइट ऑन दैट टॉपिक, बट यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स विच आई हैव मैंशनड। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है वो सब चीज़ें आपने करनी होंगी। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, सो प्लीज़ follow these things and then you have to remember pre-writing stage, while writing stage, post writing stage, you have to mention all these stages in your assignment। ये सब अपने assignment में follow बताना होगा and I will show send you the soft copy of the assignment to as a sample or model paper। In the end at the end, let me tell you one very important thing, and this is also important note। in an exam you will not have time for all these stages। इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास एग्जाम्स में टाइम नहीं होगा। डेफिनेटली इन एग्जाम्स आर अप्रोच इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम का मैंने आपसे कहा, एवरीवेयर वी हैव टाइम, यू नो, we have time restriction, so time management is very important। So in the exam we don't have much time, that's why these all stages are not possible, but your answer will be more successful। आपका आंसर ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इफ़ यू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़। अगर आप आइडियाज़ को जो है ब्रेन स्टॉर्म कर लें, ऑर्गेनाइज एंड प्लान देम प्रॉपरली एंड रीड एंड चेक एंड एडिट, ठीक है। पहले ब्रेन स्टॉर्म कर लें अपने आइडियाज़ को, यानी कि ज़ाहिर है आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने रट्टा नहीं लगाया होगा तो, ठीक है। रट्टा लगाने वाला बंदा क्या सीखता है या क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ जाके लिख दे। बाकी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ के और आप उसको लिखना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली पहले ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़ करेंगे, जिसको हम प्री राइटिंग से कहते हैं। क्विकली लिखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आप करेंगे। उसके बाद आपने उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर एक प्लान बनाएंगे कि आप पहले ये करना, फिर ये एंड देन आफ्टर डूइंग दिस लास्ट 15 मिनट जो होते हैं उसको आप सेव कर लें कि यू हैव टू स्टॉप बिफोर 10 or 15 minutes, or in last 10 to 15 minutes you have to use you have to do reread and check and then edit your answers। उसी को पढ़ के अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा और एडिट कर लीजिएगा जो भी करना हो। सो इन दिस वे you will be able to produce a very good answer and that will be effective and you can get good marks। Okay, with this I conclude my presentation। if you have any problem regarding this you can ask me। once again I'm telling you, this is your for your assignment। बहुत से स्टूडेंट्स की मैंने मेजोरिटी को मैंने देखा है कि उनकी राइटिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक असाइनमेंट दिया जाए और उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन, एक क्लास ली जाए जिसमें समझाया भी जाए आपको, सो दैट यू कैन डू इफेक्टिव writing and you can do things in a proper manner। this is also called creative type of things because you are free to choose any topic and you can write following these rules and regulations which I have mentioned।
थैंक यू वेरी मच।